Hello and welcome to the YouTube Live with Prateek Singh. Today we're going to talk about becoming a successful trader. I'm also going to talk about trading strategies for beginners, managing risk in the markets, protecting your trading capital, and do's and don'ts of a trader. Today we have a very special guest. Prateek, welcome to the show. Excited to talk to you about trading. Hey, Nainesh, thanks so much for inviting me. It's a privilege to be here. And you guys are doing a fantastic job there at Fisdom. So, super excited to get into it. So let me first introduce Prateek to you. For all our viewers, Prateek is the founder and the CEO of LearnApp. LearnApp is an edtech platform that provides movie-like video courses on trading. So he started out at the age of 17, a very early age to enter the stock markets, and since then has been an active trader. Prateek also has done multiple ventures before Trade Academy, Market Scientists, and the idea was to create education for stock market and pass it to the masses. For LearnApp was established in 2018, and Prateek has done a wonderful job because just let me tell you, I'm also a subscriber, and I think the content is amazing. So Prateek, let's start off with my first question. You've been in the market since the age of 17. That was the same time I entered the stock market, age of 17. Okay, exciting. First, tell us how you entered the stock market. Second, the next question is what made you become a trader? Yeah, I think these answers, make sense in retrospect. But I'll tell you what I was thinking then, right? So I was born in Abu Dhabi, moved to Africa, Singapore, Malaysia. So there was a lot of traveling happening when I was a kid. And then we moved to India, and my dad's a colonel. And he said, Beta, I think you should learn to invest and trade because you need to have free time in your life when you grow up and you're young. So you start learning. So that's exactly how he sounds, by the way. I hope he's not watching this. And he opened an account and I started to trade. Now, to be very honest, greed got me into investing in trading, right? I'm unabashed about this. I said, I literally went to the Forbes 100 list and saw there are a lot of hedge fund managers, Nanish, right? And they had net worths in billions of dollars. And I said, dude, what is a hedge fund? And I found out they take money and they trade. And they basically trade, right, over a longer time frame. And I said, this is interesting. Ghar se ho sakta hai, it's on the internet. Mere ko seekhna hai. And I started to learn. And I think I've always thought learn first and then do. And I was on TraderG, bunch of these places. And I just started doing this on a daily basis, looking at the market from start till end. Economic Times was where I'd get my data, Nanish, right? So that's where I would see volume shockers, 52-week high, all-time high, price shockers. And I'd be like, oh, they are filtering data. I'll just do something and make 1 rupee a day multiplied by 1,000 shares. And I'll make 1,000 rupees a day. I'm sure all of us have done this calculation, right? So 30 din mein to 30,000 ban jayega type. So that's how I got into trading. And I always thought of it in the long term कि मैं इसको profession बनाऊंगा. I want to become a hedge fund manager. I never thought, because I was so young, right? It was not like कि मुझे एक साल के लिए पैसे कमाना है. It was more like मैं profession बनाऊंगा इसको. So that's how I got into the market. So interesting, Prateek. In fact, I had a very different journey, right? I wanted to become Rakesh Jhunjhunwala on day one, right? And that also from trading. Like I entered the market and I said, "Bus, this is the way I want to make money." Yeah. You were modest enough to say calculation is 1,000 into 1 rupee. I used to start off with lakhs. 1 lakh into 1 rupee, 1 lakh a day. Amazing, you're starting. So Right. interesting. Now let's talk about obviously when you enter the market, when you started trading, a lot of drawbacks, right? You would have seen some downturns. You would have seen market cycles, markets being irrational a lot of times. So tell me about some circumstances, where you've actually faced losses, or that you've wondered, or you've actually doubted that okay, this profession is meant for you. Should you be trading? Will this help you kind of live a lifestyle throughout, or do you think that okay, this is something I can do just in my free time and manage something else? Tell us more about this. That's a good question. I heard 3 questions. First question was first question was tell me about your losses. There's Yeah. just so many. I'll pick a situation.
And then you can repeat the other two questions after that, right? Sure. I think the next was my depression cycle. How often did I get into depression because of trade? I'd love to Yeah. talk about that as well. Cool. So I started losses, right? Okay. So I remember this was 2008, 9, 10. And in 2010, there was a crash that had happened, a mini crash. And isme basically all stocks had fallen, including Nifty, etc. And I had just started to trade futures. Here was my ritual. I'd get up in the morning, I'd log into a Yahoo group where I had a bunch of trader friends. We would share knowledge after the markets, and during the day when the markets were on, we would share each other's trades. And we thought we learned from each other. Okay. Terrible idea, by the way. But I was short, and I had one thing that I wanted to do that day. And I'm sure a lot of people think about it. I was trading this stock called HDIL. And the HDI was a real estate stock. And the idea was simple. The lot size was in thousands. And if I just made 4 or 5 rupees in a single day, multiplied by the lot size, it was coming to 20,000 rupees in a single day. So I had literally drawn a support line and a resistance line and said, Jab yahan par aayega, I'll short, I'll buy back, and I'll repeat until I make the 20,000 rupees. Now, what happened was I completely forgot about brokerage charges, slippage, etc. And मेरा entry यहाँ था, लेकिन actually it was here after accounting for all of the charges, and then I would exit slightly above here, but there were other charges. I would actually lose money on each of those trades. And I was foolish enough not to calculate the actual return on each trade. I would just do it on an Excel. And that day I thought I made 18,000 rupees, but I lost 48,000. And it compounded, right? And it was so shocking to me. My heart went down. I walked, and it was in a single day over multiple trades. And I was like, wow, I'm so stupid that I could have stopped this. It wasn't a single trade that the market went. I did it multiple times, right? And I know at the end of the day, HDL was up 3.5%. So I was like, dude, if I just held it for like the day, I would have made so much money. So I think so the lesson from this is what? The lesson is this. Don't think if you increase your money cycle, you'll be able to make more money. More trades don't equal to more wealth. What matters is, are you managing your risk? Do you know when your entry and exit is? How much are you actually making after all costs in every single trade? And are you able to do this over a long period of time? You just need to take a few good decisions every month or every year based on your strategy. Don't try to think मैं बहुत सारे trades करूँगा, right? Like for example, scalping. Just avoid it, right? Why do you want to do scalping? It's a bad idea. So that's what taught me कि if you keep doing one thing over and over again, doesn't mean it's a good thing. You want to take good quality decisions versus taking many decisions. So I don't know if that answered your question, Nainesh. Yeah, that does, and there was a learning. Yeah, we've got a comment from one of our users, and he wants us to speak in Hindi. So I think let's switch. अच्छा मैं हिंदी में बोलूँगा. अच्छा हाँ ठीक है. Okay, so एक चीज सीखने मिला है कि as a trader आपको बहुत सारे trades नहीं करने हैं. You plan trades or limited trades and then see your capital improve. So that's something that I learned from what you said. अभी बात करते हैं as a trader की life के बारे में. Now, I mean, you've had times in your life where you felt trading is not my thing. Like job करते हैं, पैसा कमाते हैं, fixed पैसा कमाते हैं, या दूसरा startup चालू करते हैं, वहां से पैसा कमाएंगे, मार्केट से टर्मिनल देख के पैसा नहीं आता है. What's your view? How do you handle these scenarios? How do you handle days where you feel trading is not really making me money? Quit करते हैं. Let's get out of trading. Do something else. I think ना मेरे 3 phases हुए हैं लाइफ में, ठीक है. फेजेस क्या मतलब 3 पर्सनालिटीज हैं मेरे लाइफ में. एक है मेरा ट्रेडर पर्सनालिटी, जहां पे मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करता हूँ. दूसरा है मेरा एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी, जहां पे मैं लर्न ऐप बना रहा हूँ, मार्केट साइंटिस्ट बन रहा है, एक्सेट्रा. एंड तीसरा है मेरा सूडो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, जहां पे मैं संडे को एक वाइन का ग्लास लेके नोट्स लिख रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ. लाइफ तो यही है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट? ये 3 तरीके के लोग हैं. अब सच्चाई क्या है जो मुझे अभी तक पता लगा? देखो मेरे बाल थोड़े वाइट हो रहे हैं, तो प्लीज सुनिए मेरी बात को. ये है कि आप कुछ भी स्किल उठाएंगे, उसमें एक डिप्रेशन फेज आना मैंडेटरी है. लाइफ ऐसे ही बना है कि you will get bored with something that you're doing. You will feel it's pointless. You will feel कि यार सही नहीं हो रहा है, because just like the markets,
आपका लाइफ भी ऐसे साइकिल में जाता है। आई थिंक आपने भी देखा होगा, सबने देखा है, राइट? सबने खराब टाइम्स देखा है। आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो कि आपने जो स्किल चूज किया है ना, कि आपको जेन्युइनली वो पसंद है। क्या आप संडे बैठ के सच में चार्ट्स देखते हो क्या? क्या आप संडे बैठ के सच में कोई स्टार्टअप के बुक पढ़ते हो क्या? या संडे बैठ के आप कुछ और करते हो? तो वो आपको संडे लेजर टाइम जो है, अगर आपको फुल टाइम बन जाता है तो लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। तो जो लोग इसलिए कहते हैं ना कि डोंट चेज मनी, वो इसलिए बोलते हैं कि आप मनी की वजह से ट्रेडिंग जा रहे हो ना, तो जब बहुत मुश्किल हो जाएगा ट्रेडिंग, तो आप कोसोगे, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो मुझे तो जेन्युइनली ट्रेडिंग बहुत पसंद है, राइट? मैं 15 साल से यही बोल रहे, मेरी बीवी परेशान हो गई है, राइट? अभी भी आज भी ट्रेडिंग के बारे में बात करें, मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद है, चार्ट देख के पसंद, आई लव इट, राइट? स्टार्टअप बहुत पसंद है, आई लव बिल्डिंग, अच्छा लोग को हायर कैसे करते हैं, ऐसा आई जेन्युइनली एंजॉय इट। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जब जेन्युइनली एंजॉय करते हो, तो वो जो डिप्रेशन फेज है वो चला जाता है। इसमें लर्निंग ये है, लर्नअप चलाते हुए मैं मल्टीपल टाइम्स डिप्रेस्ड हुआ। आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, बहुत खुश दिखता हूं मैं, एंड मैं हूं भी 99% ऑफ द टाइम आई एम सुपर हैप्पी, सुपर एनर्जी। बट ऐसे टाइम्स हैं जहाँ पे रात को 2 बजे वॉक पे जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैंने क्या गलती की? एंड वो ट्रेडिंग में भी हुआ, तो वो तो हर चीज में होता है। तो आई थिंक आपका मेंटल जो स्टेट है वो आपको मैनेज करने के लिए आपको टाइम लगाना चाहिए। मैं आई स्पेंड मल्टीपल आवर्स अ वीक ऑन माई सेल्फ, जहाँ पे सिर्फ अकेले हूँ, वर्क करता है, जो मुझे बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनूंगा, बाहर घूमने जाऊंगा, वॉक करूंगा, सिर्फ मैं हूँ। तो आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Yeah, you did. Let me go to the next question again on what you said. Okay, mental health. Okay, let's talk about that now. When we talk about trading, it's always said whenever don't take emotional trades. Always ensure that you're in the right mind frame when you're trading. As a trader, like let's say a full-time trader. Okay, let's assume LearnApp doesn't exist. You're a full-time trader. Yeah. How do you manage this mindset? It's really important to come in positive every day, new energy, new ideas, new strategies, because market has something new every day. Market is not flat. You never have days where market is the same as yesterday. You like right now what you see, right? The entire war scene, no one knows what to do. I mean, the best thing you do is kind of wait for the markets to understand what's happening and then take trades. So tell me, how do you handle these situations? हाँ, मतलब एक सच्चाई बोलता हूँ यार एकदम, और कोई अगर इसको देख रहा है तो कमेंट्स में भी तालियां बजाएगा, ठीक है? अगर अग्री करते हो तो। आप ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो, इमोशन आप नहीं हटा सकते, ठीक है? आज भी मेरा एक बाय ट्रिगर हुआ था, मैं अरे ये कौन सा बाय ट्रिगर हो गया राइट? तो ये नहीं जाता है, और जा नहीं सकता है। इसको हैंडल करने का तरीका मैं बताता हूँ। लेकिन तो अगर आप अग्री करते हो नहीं जा सकता, तो प्लीज कमेंट में डालो, तो पता लगेगा लोग अग्री करते हैं इस चीज को, एंड यू टेल मी अगर ऐसा कुछ आता है कि नहीं, ठीक है? इसको हैंडल कैसे करना है, आप कुछ और करो। तो मैंने कैसे हैंडल किया मैं बताऊंगा। मेरा जो सिस्टम था, मैंने पहले लिखा मुझे क्या चाहिए ट्रेडिंग में से, ठीक है? आप पैसा नहीं लिख सकते, तो मैंने क्या लिखा वो मैं बताता हूँ, आप फिर खुद का फ्रेमवर्क बनाना। मैंने बोला मुझे सुबह 9:15 और 9:30 के बीच में ट्रेड लेना है, ठीक है? ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने बोला ये करना है मुझे। उसके बाद एंट्री और एग्जिट अपने आप होना चाहिए। मैं कोई लिमिट ऑर्डर डाल दूं एग्जिट के लिए, स्टॉप लॉस डाल दूं और भूल जाऊं, ठीक है? तब तो ब्रैकेट ऑर्डर नहीं होता था, हम दोनों ऑर्डर डालते थे तो दोनों ऑर्डर डालते थे, तो दोनों ऑर्डर डाल के छोड़ दो। एंड इसके बाद मुझे देखना नहीं पड़े कि क्या हुआ मार्केट में। एंड तब ऑटो स्क्वायर ऑफ होता था, जिसका चार्ज नहीं लगता था, पता नहीं कुछ प्लेटफॉर्म में आज तक नहीं लगता है, बट 3:15 को नहीं लगता ना सिस्टम, ठीक है तो वहां पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता था, तो अगर कुछ हिट नहीं हुआ तो क्लोज। ऐसा सिस्टम मेरे को चाहिए था, तो मैं इसको मैन्युअली ना बैक टेस्ट करने लगा एनी ब्रोकर पे, ड्रॉ एंट्री ड्रॉ करके, एंड आई फाउंड अ सिस्टम व्हिच वर्क, जो आज तक मैं एक्चुअली ट्रेड करता हूँ। लकीली वो सिस्टम आज तक चलता है, तो वो आई एम बहुत खुश हूँ उस सिस्टम के साथ में। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। आप ये मत बोलो कि भैया मुझे तो 8 घंटे बैठने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब वो जो मेरे पास टाइम बच गया ना नैनेश, वहां पे लर्नअप पैदा हुआ बिकॉज मैंने हैंडल करके आई स्टेड अवे फ्रॉम द स्क्रीन, एंड क्योंकि मुझे सिस्टम ही ऐसा था कि मुझे अपने आप ही एग्जिट करता है वो, मुझे सिर्फ एंट्री पे ध्यान देना था, और एंट्री को मास्टर करने में मेरे को कई महीने लग गए, क्योंकि मुझे 9:20 एंटर करना था और ऑर्डर जाता ही नहीं था। तब इतना ट्रैफिक होता था ना कि आपको करेक्ट प्राइस ही नहीं मिलता था, तो उसको मास्टर करने में थोड़ा टाइम लगा, बट एग्जिट तो ऑटोमेटेड था। तो अब मैं अपने दिन के साथ करूं क्या, तो मैं अपना कंप्यूटर बंद कर देता था, बाहर चला जाता था,
मैं आज तक जानता हूँ कुछ ट्रेडर्स को जो साइकिल पे निकल जाते हैं, कि उनने ट्रेड डाल के साइकिलिंग पे निकल गए, कि आई एम नाउ अवे फ्रॉम द ट्रेड, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली मेक्स यू द मनी. सो इन समरी, डिसाइड आपको कितना टाइम बिताना है मार्केट में. आप ये भी बोल सकते हो मुझे महीने में फ्राइडे को क्लोज करना है, तो फिर आप मंथली चार्ट पे कोई स्ट्रैटेजी बना लो, राइट, कि मंथली चार्ट के क्लोज पे मैं एंट्री एग्जिट ले रहा हूँ. यू कैन डिसाइड. उसके बाद आप डिसाइड करके डू समथिंग एल्स विथ योर लाइफ, डोंट ट्रेड. तभी आप फिर डिसिप्लिन ला पाओगे अपने ट्रेड में. तो स्टे अवे बेसिकली. Amazing. Now let's talk about LearnApp. Okay, you founded a lot of startups. हमने सुना है you started off with a cafe, and then eventually moved to LearnApp. Tell me about this. First, what brought you to the markets where you decided ed tech is the way ahead? Tell us about LearnApp, the journey. What made you start this off? Or now today, as of today's date, how are you guys doing? अच्छा, ये तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लेते हो आप यार नैनेश. मतलब सिंपल था कि कंपनी बनाना है, बड़ा कंपनी होना चाहिए, बहुत लोग काम होने चाहिए. आई एम अ पर्सन जिसको आई लाइक टू मीट पीपल, फीड ऑफ देयर एनर्जी. एंड ट्रेडिंग यार बहुत लोनली चीज है यार. आप लोग के साथ नहीं कर सकते, लोग के साथ करते हो यू गेट वर्स, क्योंकि उनकी बात सुन के आप एग्जिट कर लेते हो. हाँ यार सही बोल रहा है यार, पुतिन ने वॉर कर दिया यार, एग्जिट कर लो. बट आपको सिस्टम फॉलो करना है. तो मैंने और कैसे कर सकते हैं, बिजनेस बनाएंगे. एंड रिचर्ड ब्रांसन ये सब पढ़ पढ़ के तो और दिमाग खराब हो गया मेरे वाला. नहीं, यही करना है मुझे. तो अब फर्क क्या था ना नैनेश, इन ऑल माय प्रीवियस स्टार्टअप्स मेरे पास को फाउंडर्स थे नहीं. LearnApp में को फाउंडर हैं, तो अंकुश ओबरॉय, स्वाति शर्मा, सोहेल आलम. मैं इनको 15 साल तक जानता हूँ. एंड आई नोन देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो वो, एंड सबका हमारा काम बटा है, कोई टेक्नोलॉजी देख रहा है, कोई बिजनेस देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है. तो इट रियली मेक्स लाइफ इजियर. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड ऑल द डिफरेंस. कि इफ आई एम डूइंग समथिंग स्टूपिड, द अदर पर्सन से, गधे क्या कर रहा है, ये ट्राई कर. तो इट्स गुड, राइट, बिकॉज इफ यू आर द सोल फाउंडर, people think you're the smartest person in the room, which is not true. Having co-founders really helps. हाँ, तो that's it यार. बार बार ट्राई करते रहे, एंड अभी भी ट्राई कर रहे हैं. तो यार और आज के टाइम में हमने प्लेटफॉर्म you've got close to about 3 lakh, not 3 lakh users. हाँ, So तो we get 850,000 visitors on the platform. wow. A year, which is, मतलब 10 लाख होते तो मिलियन बोलते. तो मैं राउंड ऑफ करके बोलता हूँ कि क्लोज टू मिलियन यूजर आते हैं साल के. बट 850,000 है, 8,50,000. एंड उसमें से 3 लाख लोग साइन अप किए हैं. तो आई थिंक इस साल हम उसका 2x 3x तो करेंगे. तो वी आर एमिंग की 6 से 8 लाख साइन अप हो. अगर 10 लाख के आसपास तो बहुत सही है, बट थोड़ा कम चांस लग रहा है. एंड विजिटर्स आई थिंक वो 8 लाख से शायद 30 लाख के आसपास होना चाहिए इस साल में. एंड हमने उतना फंडिंग नहीं रेज किया ना, वी रेज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी. एंड ये सब प्रॉफिट से हम ग्रो कर रहे हैं. प्रॉफिट तब आता है ना यार, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है एंड यूजर्स ट्राई कर रहे हैं और उनको पसंद है, एंड वहां से ग्रो हो रहा है. तो हमारा ये फिलॉसफी है यार कि ऐसा कुछ बनाओ कि ऑर्गेनिकली आप ग्रो कर पाओ. तो वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग करने की. Interesting. अभी recently एक article पढ़ा, only 5% of traders actually make money. Right. The remaining, everyone's there in the markets just trying to kind of break even or beat the FD or the inflation rate. Let's talk about that. How does one put himself in this bucket? How do you get in the 5% bucket? Okay, so the reason, so 5% is a very large number. सबको ये नहीं लगना चाहिए 5% तो बहुत कम है. आपको ये सोचना है कि कितने स्किल्ड ट्रेडर्स इस बकेट में है. ऑब्वियसली बहुत कम. मैंने अकाउंट खोल लिया, आई कैन स्टार्ट ट्रेडिंग. तो एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पिछले जमाने में चले जाओ, जब लोग स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग करते थे, तो ज्यादा लोग पैसे कमाते होंगे. बट रिटेलर्स डोंट स्पेंड टाइम लर्निंग ना. तो बुल मार्केट में खरीद लेते हैं, मार्केट ऊपर चला गया, कहता मेरी स्ट्रैटेजी चल गई. फिर बेयर मार्केट आ जाता है, सब खत्म हो जाता है. तो अभी तो एवरीवन's अ विनर, बट ऐसा गलत है. फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. सही बात है, सही. DLF हो जाता है फिर. बट टू से दैट आई आल्सो ओन शेयर्स ऑफ रिलायंस पावर. देखो गलतियां सब करते हैं. आपका क्वेश्चन क्या था लास्ट वाला? No, so my question is, how do you get in this 5% bucket? मतलब मेरे हिसाब से बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है यार. मतलब I'll tell you a non-LearnApp way to do it. वरना फिर लोगों को लगेगा, बोलूंगा LearnApp जाओ. मैं non-LearnApp way तरीका बताता हूँ. पहले तो आप
जैक श्वैगर की जो बुक्स है ना, इंटरव्यू विद ट्रेडर्स, वो कोई भी खरीद लो एंड वो पढ़ो, वो उससे आपको कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा कि ट्रेडर इन्वेस्टर सोचता कैसे है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की बात हुई है। तो आई थिंक जैक श्वैगर का मार्केट विजर्ड्स आप देख लो, सॉरी पढ़ लो, बहुत कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लो और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो। बहुत किताबें हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो प्लीज किसी रिलायबल चैनल पे जाना, बिकॉज बहुत लोग गलत चीज बोल रहे हैं यूट्यूब पे, जो मतलब आपके मतलब आपका पैसा हाफ हो जाएगा। तो गो टू रिलायबल चैनल और समथिंग, वहां से सीख लो। एंड एक बार ये आप सीख लिए, आप एक स्ट्रैटेजी बना लो जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कर रहे हो। स्ट्रैटेजी में स्टॉक सिलेक्शन भी होना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट यार, स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए आपको 5-10 मिनट ही चाहिए। तो ये आप कर सकते हो। LearnApp में हम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं कि पहले आप बेसिक सीख लो, फिर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, फिर स्ट्रैटेजी सीख लो। स्ट्रैटेजीज में स्टेप बाय स्टेप बैक टेस्ट करके होता है। ये पार्ट पहुंचना ना आसान नहीं है, लोग यहाँ पे जंप करना चाहते हैं, जो सही नहीं है। पहले इसका कॉन्टेक्स्ट हो, एंड अगर इफ यू जस्ट फॉलो दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यू विल बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंट्राडे सीख रहा हूँ कोई स्ट्रैटेजी एंड मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या एक हफ्ते में पैसे बन सकते हैं? द ट्रूथ इज नो। इवन दो यूर ट्रेडिंग एवरी डे, आपको एक क्वार्टर के ऊपर इसको मेजर करना है कि मेरा प्रॉफिट बना या लॉस बना या क्या हुआ। तो इवन इफ यू ट्रेडिंग एवरी डे, का ये नहीं मतलब हर हफ्ते पैसे कमाऊंगा, ओवर अ क्वार्टर आप इसको मेजर करोगे। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का आउटलुक लॉन्ग टर्म होना चाहिए। Yeah, that's it. That's how you can. Right. I agree. You spoke about risk management. आपने risk management की बात की है. Let's talk about measures that you take as a trader to manage your risk, because ये बहुत ही important है, right? In markets, sometimes when you're going wrong, you will keep averaging your trade till the time you realize you've gone absolutely wrong, and you maybe, if it's a product like an option or let's say a future, you've realized that you've blown up the account. और at the other side, we have a lot of people जो अपने shares को holdings, equity holdings को भी average करते रहते हैं। Certain stocks 400 से 2 रुपए हो जाता है, तब तक तो public buying कर लेता है, because that mentality कि अभी 100 rupees है, it's cheaper than a meal, अभी 50 रुपए हो गया, 50 रुपए में क्या होता है, ये तो बस खत्म हो गया। 10 रुपए है तो बोलेंगे भेलपुरी से चीप है, ले लो, स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा, और 2 रुपए पे फिर बिकेगा नहीं। So my question to you is, how do you manage risk? Risk management, if I can start with a story, if you don't mind. Please do. 2008 में ना जो क्रैश आया था ना निफ्टी का, मतलब ग्लोबल मार्केट्स का, तो मैं बहुत लकी था उसमें। आई वॉज अ न्यूबी लकी फूल। तो क्या किया था, आई ड्रू अ ट्रेंड लाइन ऑन निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट, शायद वीकली चार्ट होगा, एंड निफ्टी ने वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया। तो मैंने बोला यार लगता है ना ट्रेंड चेंज हो रहा है, और मैंने शॉर्ट कर दिया। तब आता था मिनी निफ्टी, वो 20 का लॉट होता था, तो 10,000 रुपए का एक लॉट मिनी निफ्टी का फ्यूचर्स आता था, 10,000 रुपए का। कैन यू बिलीव इट? तो 10 मार्जिन के साथ। तो मैंने आई थिंक 1 या 2 लॉट या कुछ ऐसे खरीद लिया था, आई डोंट रिमेंबर नंबर ऑफ लॉट्स, एंड आई बेच दिया, सॉरी शॉर्टेड a few lots, and the market tanked and my capital doubled. Okay, now the question is, क्या मैं जीनियस था कि फूल था? The answer is फूल था, because अगर ऑपोजिट होता, मार्केट बहुत ऊपर जाती तो क्या होता, मेरा मान लेते हैं आधा कैपिटल चला जाता, तो फिर मैं क्या करता? अब द लॉ ऑफ कंपाउंडिंग, रिवर्स कंपाउंडिंग वर्क्स लाइक कि अगर मेरा कैपिटल 1 लाख था, 1 लाख का 50,000 हो गया, अब मुझे 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा टू गेट टू माई ओरिजिनल कैपिटल। तो रिवर्स कंपाउंडिंग भी होता है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल है कि जो मेरा एग्जांपल मेरे साथ होता है वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, विच मीन्स एक ट्रेड पे अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, एक ट्रेड पे 1,000 या 2,000 से मैक्सिमम आपको नहीं लूज करना है, दैट्स इट। तो आप उतने ही शेयर्स लो जितना आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया कि 1,000, दैट इज 1% ऑफ योर कैपिटल, से ज्यादा आपका लूज नहीं हो। अब इसमें आपने कितना कैपिटल डिप्लॉय किया डजंट मैटर। तो लोग कहते हैं ना मैं कैपिटल डिवाइड कर रहा हूं, वो फर्क कुछ नहीं पड़ता। आप एंट्री माइनस स्टॉप लॉस देखो, लॉस कितना है, वो लॉस वर्स्ट केस 1% ऑफ योर कैपिटल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। And reward, then how do you measure the reward in that case?
तो रिवॉर्ड जनरली 1:1 नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर आपका 1000 का स्टॉप लॉस है तो कम से कम 2000 का तो प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। बट आई विल से दिस कि आप रैंडमली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 2000 होना चाहिए। आप जो आपका स्ट्रैटेजी है वो जनरली बैक टेस्टेड होता है एंड वो बैक टेस्ट जो है आप आपको बताएगा कि प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए। बट जनरली स्पीकिंग 1:1 नहीं होता, 1:2 मिनिमम होता है कि 1000 का लॉस है तो 2000 का प्रॉफिट टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो आंसर शिवानीज क्वेश्चन अगर जो ने चैट में डाल दिया है। Nainesh, yeah. What is the Yeah. name of the book and the author? So the name of the book was Market Wizards and the author का नाम है जैक श्वैगर। थोड़ा डिफिकल्ट होगा लिखना बट आप लिख दो, लोग गूगल कर लेंगे। Sure. So, thank you for that. So, Prateek, I think very clear. Risk management also involves your risk reward and a very managed trade setup. Okay. So, I'm going to make this more interesting. Okay. You may choose to go into detail, but tell us one favorite strategy of yours. Okay. If simplify it, describe to us how you manage it, and how do you put it in the market. Like, let our viewers know what they can do or how a strategy is made to kind of make money intraday. It could be positional, whatever you're comfortable with. ठीक है, बट जो मैं समझाऊंगा थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है, तो अगर कोई एडवांस्ड क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल देना एंड हम आंसर कर लेंगे उसको। बट पॉइंट है कि सिस्टम कैसे बनता है वो सीखना। तो एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले जब सिस्टम बनाते हो ना, पहले आपको सोचना है मैं कौन से हर्ड मेंटालिटी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ। तो आपका कोई ऑब्जर्वेशन होगा कि भाई जब ये होता है ना तब ये तो जरूर होता है, ऐसा कुछ आपका थ्योरी हो, कोई फंडा होगा। तो एक मैं ऐसा फंडा बताता हूँ। तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, बजाज फिनसर्व, कोलगेट पामोलिव, एमआरएफ, यार ये पीडीलाइट, ये बड़े अच्छे स्टॉक हैं, तो चढ़ते ही जाते हैं, कुछ भी नहीं होता इनको, मुझे ऐसे स्टॉक इन्वेस्ट करने हैं। और गीतांजलि, यस बैंक, डीएलएफ, ये स्टॉक्स नहीं चाहिए मेरे को। तो बाय डेफिनेशन अगर मैं फर्स्ट लॉट को किसी तरह ढूंढना चाहता हूं तो ये स्टॉक्स कैसे दिखेंगे। तो आप एक पेपर पेन लो या अपने दिमाग में एक व्हाइट बोर्ड के सामने इनका स्टॉक का प्राइस ऐसे ड्रॉ करो ओवर 5 इयर्स। तो जनरली आप कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, करेक्ट, सब ऊपर ऐसे जा रहे हैं। तो क्या ये स्टॉक्स कभी बहुत लो गिरेंगे? जनरली नहीं होता, जनरली ये हाई पे हाई बनाते रहते हैं। तो मेरा फर्स्ट फिल्टर हो सकता है कि कोई कंपनी नया हाई बना रहा है, मैं उसको शॉर्टलिस्ट करूंगा। तो एक हो सकता है फॉर एग्जांपल 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई। तो ऐसा कोई स्टॉक जो ऑल टाइम हाई बना रहा। अच्छा, तो हमारे फर्स्ट फिल्टर हो सकता है। सेकंड फिल्टर हो सकता है कि आई डोंट वांट अ स्टॉक जो एकदम अननोन कंपनी हो, मैनेजमेंट पैसे लेके भाग गई, तो मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करूंगा, वो तो बहुत एफर्ट है। तो ये जो 52 वीक हाई हम चूज कर रहे हैं या ऑल टाइम हाई, जो भी आपको पसंद है, ये सिर्फ निफ्टी 100 या निफ्टी 50 में से चूज करो, तो चांस ऑफ फ्रॉड रियली रिड्यूसेस बिकॉज देयर इंडियाज टॉप 50 टॉप 100 कंपनीज। और आपको फंडामेंटल एनालिसिस का दिमाग खोपची नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक है। तो फर्स्ट है कि भाई हाई बना रहा है, सेकंड है कि निफ्टी 100 में से लिंक है, एंड थर्ड है कि आप वो निफ्टी जो हमने शॉर्ट किया था उसका एग्जांपल ये, तो एक ही ट्रेड में 50% इधर उधर हो गया कैपिटल, तो वो नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन डिवाइड आवर कैपिटल इनटू से 20 स्टॉक्स, कि मैं 20 स्टॉक में डिवाइड कर दूंगा एंड 20 स्टॉक ऐसे उठाऊंगा। तो चांसेस ऑफ एक स्टॉक फट के आपका कैपिटल चेंज कर रहा है वो कम हो जाता है। तो बस ये आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। अब जैसे कोई 52 वीक हाई बनाएगा, आप एंट्री लोगे, 20 का लिस्ट होना चाहिए, इसमें एक प्रॉफिट टारगेट लगा दो कि 60% पे एग्जिट करूंगा, स्टॉप लॉस 30% पे एग्जिट कर जाऊंगा, और जब कोई स्टॉक निकल जाए, कोई नया स्टॉक है, उसको रिप्लेस करता रहूंगा मैं। अब जनरली ये जो मैंने बोला है हो सकता है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हम लोग एक एमी ब्रोकर करके एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या पाइथन यूज कर सकते हो। हाँ, एंड इनमें आप ये क्वेरी डाल के ये रूल्स जो आपको मैथमेटिकल रूल्स बताए थे, ये पिछले 20 साल में रन करके देख सकते हो कि एक्चुअली प्रॉफिटेबल था कि नहीं। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजीज लर्नऐप पर भी हैं, बट वो है वो बैक टेस्ट है, राइट। बैक टेस्ट से पता लगेगा
कि ये प्रॉफिटेबल था कि नहीं, और अगर प्रॉफिटेबल है तो बस ये आपका सिस्टम बन गया, आप इसको फिर ट्रेड करते रहो. एंड हाँ, बेसिकली दैट्स इट ना. जिसमें आप स्टॉक नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें लोग को डर क्या लगेगा नैनेश कि यार स्टॉक जो हाई बन रहा हो मैंने खरीद लिया, ये तो बड़ा मुश्किल है. तो वही है यार, मतलब दैट इट्स नॉट इजी mentally, but that Yeah. is the way to do it, you know. So Yeah, I'd like to add here. Yeah, I've also got some of the biggest gainers in my portfolio over years using this strategy. So whenever the stock crosses a quality stock crosses its life high, I go out and go shopping, buy some of them when the retail is selling it, and correct, and then make money out of it. correct. Uh, I've got one question from one of our viewers, and that's a question that's out open. Okay, a lot of people ask this because they're scared of loss. Is it advisable to always use a stop loss for a beginner while trading? Yes. It is. There's no doubt. 100%. Yeah. कोई डाउट ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं आपको. मेंटल स्टॉप लॉस करके कुछ नहीं होता. मैं फोन लेके मारूंगा कोई बोलता है मेंटल स्टॉप लॉस. आपको रियल स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है, वरना ट्रेडिंग छोड़ दो. आपका मतलब आप ही का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो डालना है. बट थोड़ा स्पेस देखना है, ऐसे नहीं कि आपने 0.5% दूर कर दिया. कैपिटल डिप्लॉयमेंट कम कर दो, ट्रेड विद अ स्मॉल अमाउंट, बट स्टॉप लॉस तो डालना ही डालना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. So, Apachu, this was for you. Prateek says you have to put a stop loss. Stop loss डालना है, उसमें कोई भी option नहीं है. For all our viewers, we have Prateek on for the next 15 minutes. Put all the questions that you want to ask him, and he'll be very, very happy to answer them. Anything that relates to trading, investing, Prateek will be happy to kind of help you out and guide you on how to trade and what are profitable strategies. Prateek, next question to you. Okay, give me two do's and two don'ts for a trader. Two things that you think are the most important for a trader. Two do's that I think are the most important. Okay. The most important thing in trading is to we'll say the same thing again and again, man. So, two do's is make sure that you learn a trading system, make sure you're managing risk. I'll add one more: make sure you're not looking at the screen when you're actually trading, and measure your returns over 1 quarter, 2 quarter. And आपका दूसरा था two don'ts, right? Don't take tips on Telegram. Don't take tips from anyone. Yeah, I think yeah. Don't take advice from people. The best tip in the market is don't take tips. Okay, cool. Let me now take you to a rapid fire round till the audience put some questions on the chat box. We say investing or trading. What excites you more? Both. Do both. So I do. I have like a short-term portfolio, long-term portfolio. Which one excites you more? Yeah, the trading, man. Because I see a result every day, right? And so I go short every day, Nainesh. Every day I'm short. So of course, it excites me a little bit more. But yeah. Yeah, exciting. Trading is always exciting, and investing, like Warren Buffett puts it, it's like watching paint dry on fence. So yeah, but yeah, both. If you see trading, so I would put it like this. Yeah, if you see trading, it's probably income generation, and investing will be wealth creation. So you're looking they're two different. Like you said, I have a long-term portfolio and a short-term portfolio. This is also something very very interesting. Tell us more about this. What goes into your long-term portfolio and what if the same stock falls into your short-term portfolio? How do you handle this? Tell us more. Yes, I have three portfolios. One is my short-term trading, जहाँ पे it's intraday, right? The second is like an active approach, जहाँ पे the average holding time is probably like 3 months. And then there's a long-term thing, ki, dude, if this company falls 50%, I don't really care, right? So basically these three. Now, I think the interesting thing is trading is for income. I think this thinking is wrong. So I'll tell you my experience last year in my intraday strategy. November to February, I didn't make any money. Okay. And traded every day. And I think it was minus 20 to 23% for that entire 3 months. And then March, this is last year. And then March, within 7 days, we recouped all those losses and we turned positive. And then it was positive ever since.
So would you think of that कि 4 महीने कुछ पैसा नहीं आया as income? Of course not. Which is why I keep saying, अगर आप रोज भी ट्रेड करो उसका ये नहीं मतलब हर महीना कमा लोगे. मेरे साथ तो नहीं होता. मेरे एक्चुअली बहुत सारे ट्रेडर्स है जो हर महीना कमाते हैं. मैं उनमें से नहीं हूँ. मेरा सिस्टम में आई नो कि 3 से 4 महीने हो सकता है हर 3 साल में आए ना कुछ, एंड आई एम ओके विद इट. राइट. तो इनकम की तरह नहीं सोचना चाहिए आई थिंक इसको. बट हाँ, इट इज शॉर्टर टर्म वर्सेस 10 साल पोर्टफोलियो. हाँ, वो मैं अग्री करता हूँ. Right. So let me start the rapid fire. Okay, so you've said trading, investing, trading, exciting. Okay, next one, fundamentals or technicals. Which one goes for you? Fundamental screener, technical entry exit. Okay, amazing. So it's like a techno funda Yes, thing. Okay, always. Amazing. Okay, let's get into 3 sectors that you think are going to do good. So one question on markets. So 3 sectors, auto ancillaries. I think within ancillaries like EV and all is interesting. Ancillaries is interesting. There's a new housing index. So I think consumables is interesting. Consumer durables is interesting. And maybe banking is interesting because all neobanks are basically a skin and uske piche kuch federal bank hai, kuch aur normal bank hai. So I think fintech, because of that, I think banking is interesting. So these 3 sectors. Okay. I think you've answered my next question, which was 3 things to avoid when you're trading. So I think you've already covered that. I'll take one question from the audience. Ashutosh is asking, what is the best strategy to opt in the current highly volatile market? Can you repeat that? आपकी आवाज कटी थी. What is the best strategy that someone should take or opt for in the current volatile market? तो आई थिंक ये क्वेश्चन में बायस है. ये क्वेश्चन में बायस ये है कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है तो इस मार्केट में मैं क्या ट्रेड करूं. सच्चाई ये है, हमको मालूम नहीं कि एक्चुअली मार्केट का स्टेट क्या है. हो सकता है कल से ट्रेंडिंग हो जाए, फिर क्या करोगे. मान लो कल से 1 साल तक ट्रेंडिंग हो गया, फिर क्या करोगे अपने वॉलेटाइल स्ट्रेटजी का. फिर से चेंज करोगे. मान लो हमने चेंज कर दिया, फिर परसों मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो जाएगा, फिर से चेंज करोगे. यही थिंकिंग की वजह से हम लोग पैसा गवाते हैं मार्केट में. आपको नहीं सोचना कि अभी वॉलेटाइल है, ट्रेंडिंग है, कुछ है. आपको एक सिस्टम लेना है जो 5 साल टेस्ट हुआ हो सारे मार्केट कंडीशंस में, एंड उस सिस्टम को फॉलो करना है. क्यों? क्योंकि जब आप प्रिडिक्ट करने लग जाते हो ना कि रिलायंस ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट कौन सा स्ट्रैटेजी में करूं. अभी जियो आ गया है तो मैं कौन सा करूं. भारती एयरटेल ने फंडिंग उठा ली है तो मैं इसमें कौन सा स्ट्रैटेजी करूं. आपका दिमाग खराब हो जाएगा. तो आप ऐसा ना सोचें, एक स्ट्रैटेजी सीखें, वो स्ट्रैटेजी सब मार्केट्स में एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप प्रिडिक्ट ना करें एंड अपनी लाइफ जिएं. क्यों प्रिडिक्शन करना चाहते हैं. तो आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन. Yeah, you did very well. So I think that was a good learning, right? That you need to be focused, have a strategy in place, irrespective of what markets are doing. Obviously, you might go wrong somewhere, but your risk management will help you go back to the market next day and then put in a new strategy. So interesting answer, Prateek. Also, I'd also like to highlight that since you are in an ed tech, okay, my last question would be, how important is it to be a learned trader in the market? How important? Yeah, I think it's everything, right? It's like saying how important is it to be a learned surgeon, learned doctor, learned marketing professional. How important is learning any skill before you actually try to do it professionally? And I think professions में तो आप अपना effort डाल रहे हो, यहाँ तो अपना आप सेविंग्स डाल रहे हो यार. मतलब आप कैसे नहीं सीख सकते हो. तो सीखना तो मैंडेटरी है, वरना बेस्ट ये होगा अगर आपको नहीं सीखना है, मैं उसका ऑप्शन दे देता हूँ कि देखो बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं होता सीखने को, विच इज फेयर. तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, एक इंडेक्स फंड खरीद लो एंड खत्म. आपको नहीं चाहिए लर्न ऐप, बुक्स, कुछ नहीं चाहिए. Index strategy will beat Nifty, will be equal to Nifty and beat everything else, right? Because you are the index. तो index fund ले सकते हो या ETF ले सकते हो. I think वो बहुत सही strategy है. अगर आप trade करना चाहते हो, ये थोड़ा मुश्किल है. But maybe in our next session we can talk about how to, without learning, do like a trading sort of strategy, जहाँ पे आप साल में एक बार ही trade ले रहे हो. But effort, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा ही. So yeah, I hope that helped. Okay, I'm going to take the last question. Okay, I'm sorry for that. We've got a last question.
Ankur is asking, can you throw some light on how to trade with stock options? Okay, that's a very open-ended question. I'll Yeah. go back to the same thing, right? So stock options are just another way to trade the market. Stock options में लेकिन तीन और probabilities आ जाती हैं. एक आ जाता है टाइम का, because expiration date है. तो जो आपका asset है, it is actually losing value as you approach the expiry date. तो एक वो आ जाता है. दूसरा आ जाता है डेल्टा एंड गामा का, कि जो प्राइस है एसेट का किसी और चीज की वजह से, उसका अंडरलाइंग है, उसकी वजह से फ्लक्चुएट और कर रहा है. एंड ये फ्लक्चुएशन 1-2% नहीं, 20-30-40 200% 300% भी हो सकता है. तो एक और वेरिएशन आ जाता है. तो आई थिंक इसमें आपको अगेन एक स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए. मैं आपको बताया था आपको क्या नहीं करना. कभी ऑप्शन जाके खरीदो मत, कभी ऑप्शन जाके बेचो मत. ठीक है. अर्थात आप अगर नए हो तो ऑप्शन में भी ट्रेड ना करें, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल चीज है. आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप पैसा थोड़ा गवा सकते हो, और मोस्ट लाइकली गवाओगे. तो आप पहले ट्रेडिंग सीख लो, इन्वेस्टिंग सीख लो, ऑप्शंस क्या होता है सीख लो. क्या आपको पता था कि आप हो सकता है कॉल ऑप्शन खरीद लो एंड मार्केट ऊपर चला जाए लेकिन आपका ऑप्शन गिर जाए? अगर आपको ये आश्चर्य की बात लगती है, इसका मतलब आपको पता नहीं मार्केट कैसे चलता है. तो फाइंड आउट, ये आपका होमवर्क है, फाइंड आउट ऐसे क्यों हुआ कि आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, मार्केट ऊपर चले गई, फिर भी आपका कॉल ऑप्शन गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? तो आई थिंक आप बहुत कुछ सीखना चाहिए. ऑप्शन मेरे हिसाब से अगर आप नए हो प्लीज मत ट्रेड करो. So, Prateek, on this note, I'm going to give the closing remarks. Though I love talking to you, really enjoyed. I think we should do more of these sessions where we talk maybe specific strategies, like you mentioned. We can do strategies for newcomers. Very, very interesting answers, and I'm sure the audience loved it. Just on a lighter note, I mean, it's like you mentioned, right? It's important to be a learned trader, right? You cannot be a learned surgeon. The difference there is, you just cannot take those instruments and go and do a surgery. Here in the market, everyone's allowed. So, Yes. so the gap is a lot of people come here and try their hand on making money or quick money without understanding how it's done. So, for all our viewers, LearnApp is a platform that's providing a lot of content on financial markets and how we become learned traders. Also, Prateek, on the ETF front, Fisdom has taken an initiative. On our app, we have an ETF watch list. Okay. And we've created a specific feature where our clients can put SIP orders on ETFs. So all you have to do is just put in the date, time, and when you want to buy it, and we buy it on the client's behalf. So we have people who are actually making passive portfolios on Fisdom only How through does this ETFs. work, Nainesh? It's connected to my bank account, and every month, like a SIP, it will go into that index fund or that ETF basically, right? Yeah, so you place the ETF order on our platform, and you ensure that your trading account has the balance. So we just debit it from there and ensure the order goes through. So we have clients who are building portfolios only through passive ETF SIPs. इसमें एडवांटेज ये है कि आप क्योंकि मार्केट नहीं देख रहे हो बार बार, उन्हें ऑटोमेटेड है. अगर मार्केट डाउन जाता है तो वो एवरेज आउट हो जाता है, बिकॉज आपका 10 साल का होल्डिंग होगा शायद. अगर वो अप हो जाता है तो भी एवरेज. तो अगेन प्रिडिक्शन इज आउट, यू जस्ट ऑटोमेटेड इट, एंड आप दूर रह रहे हो स्क्रीन से. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्स, राइट? Yeah, so that's about our session. FYI for your investments with Prateek Singh, the founder and CEO of LearnApp. Prateek, thank you so much. Looking forward to more interactions. Thanks a lot.